What is form? So basically, we use form to take input from the user. If you want to fill some boxes or some forms, like you fill already fill some online forms, like if you purchase something from Flipkart and Amazon, then you need to fill some forms like your personal information and your name, your contact numbers. Like this, you for that you can use the form. The form basically is the one of section of our web page which contains the layout controls. And these layout controls are like text field, password field, email, radio button, check boxes, buttons. So form basically gives the power to us to enter the data which is sent to the server for processing such as name, date of birth, like password, phone numbers. Um, so we just taking one example, that is ki if you want to apply for a job, then what you need to do is, and they are providing you some online form, so you need to fill that form which is provided by your employer. So after completing or after filling that form, you need to click on a button to save your detail. So what you need to do, you just click on that button and then your data, whatever data you fill, is going to the server, and then server will process your request. And then if your details are completely okay, then that means your data will be saved in the database. Now this is the basic syntax ki how you can write form. There are two attributes, that is action and method. In the action part, we will just type the name of the page where we want to save the details. And in the method, we have two types of request, that is get and post. But currently we are studying HTML part, so हमको एक्शन एंड मेथड की अभी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, हमको सिर्फ डिजाइनिंग करनी है. When we study PHP, then we will see how to use action and method. Now we can see the input controls of form tag. So first, we already know form tag, which is used to define a form to enter inputs by user side. Means हम लोग जो भी input करेंगे उसके लिए कुछ input controls मिलेंगे जो form के अंदर हमको define किए जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो input controls है वो है input tag. Input tag क्यों use करते हैं? Basically, if you want to define input controls like text box, radio button, check boxes or buttons, then you can use this input tag. Text area. If you want to define a multi-line input control or multi-line text, तब आप use करेंगे text area. Label, basically it is an optional part. If you want to provide some label for an input control, then you can use this label tag. Otherwise, you can simply write the text. Field set. Field set basically it is groups the related elements in a form. यानी कि एक sections define करता है ये field set. And if you want to define some captions for this field set, then you need to use legend. Legend basically used to define a caption for a field set element. If you want to define some drop down list, then you can use select tag. And to provide some values or provide some meaning to the select tag, you need to use option. Then if you want to perform some operations or if on a click, then you can use button. But we have a three kinds of button, three types of button. First one is input type submit, second one input type button, and third one is input type reset. Reset basically if you want to clear all entries whichever you type or you select, then just define reset button. Submit button automatically call your action attribute in the form. Button, basically if you want to define designing some button, that means you need to perform some operation by using a on click event, because button will not directly call the action. Now you can see here one example
Field set basically define section. So I'm just writing some code for you. HTML. Title. Example. Oh. First, I am designing a section, that is field set. Field set open and field set close. Now first we will see the output. This now look at here. This is field set. Okay. Now I need to define a caption for this. Simply write legend login page. Close, close legend. Now you can see here the login page. Now we need to define some input controls. The first input control is input. Type is equal to text. अगर हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ना लिख के डायरेक्ट इनपुट भी लिखते हैं तो भी टेक्स्ट बॉक्स ही बन के आएगा। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट टैग है वो टेक्स्ट बॉक्स के लिए ही वर्क करता है। देखिए एक बॉक्स बन के आ गया। बट अगर आपको डिजाइन थोड़ा सा सही चाहिए तो आई एम रिकमेंडिंग कि टेबल टैग यूज कीजिएगा। टेबल टेबल अब इस टेबल के अंदर हम डिजाइन करेंगे फर्स्ट रो। देखिए रो बन गई एक। इस रो के अंदर हमने सबसे पहले एक सेल बनाया ph, इसमें हमने दे दिया है यूजर नेम and then closing this th। इसके बाद हमने बनाया एक टेबल डेटा td, इसमें आ गया हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। देखिए ये बन गई हमारी फर्स्ट रो। अब हम बनाएंगे सेकेंड रो, दैट इज tr टैग ph पासवर्ड क्लोजिंग th td इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड।
क्लोज टीडी। नेक्स्ट फील्ड। इसके बाद हमारी जो है ये रो क्लोज हो गई। अब हमारे पास एक और रो बनाई हमने टी आर। हमने कहा टी डी इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। हम बना रहे हैं एक सबमिट बटन, और उस बटन पे जो टेक्स्ट लिख के आएगा वैल्यू इज इक्वल टू वो होगा लॉगिन। देन क्लोजिंग td. Now I'm defining another td and then input type is equal to reset, value is equal to clear, and then closing td, and at last close the tr tag. So here we have two buttons, that is login and clear. अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे चाहे अगर आपको टेबल बॉर्डर के साथ में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू आपने कह दिया 4। कि आपको बॉर्डर, अगर बॉर्डर चाहिए आपको तो आप ऐसे यहाँ पे एक बॉर्डर भी बना सकते हैं टेबल के अंदर। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप मत बनाइए। इस तरीके से आप टेबल टैग का यूज करके लॉगिन पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, देखिए क्लियर पे क्लिक करता हूँ, सारा डेटा वाइप हो गया। क्योंकि ये क्लियर बटन जो मैंने बनाया है टाइप रीसेट, ये मैंने फॉर्म के अंदर बनाया है, फॉर्म के बाहर नहीं बनाया है। और जब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो वो लॉगिन के लिए मूव करेगा। बटन क्या करेगा, ये सबमिट बटन है तो ये फॉर्म को क्या करता है, सबमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ अब ये देखिए पासवर्ड जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड की शेप में आ रहा है। क्यों, हमें दिख नहीं रहा है क्या टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड दिया है। इसी तरीके से आप इनपुट टाइप रेडियो बटन, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये जो मैंने यहाँ पे कोड है ये रन करेगा नहीं, बट वी विल सी। चेक करते हैं यहाँ पे कोड अगर सही लिखा है कि नहीं, इसमें कुछ मिसिंग ना हो। कि जब हम पीपीटी में कुछ लिखते हैं और तो उसके जो कोड्स होते हैं वर्ड पैड के और पीपीटी के, वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। लेट्स सी दिस कोड इज वर्किंग और नॉट। दिस कोड इज वर्किंग, तो हियर यू कैन सी this student information text, it is provided by legend. Basically here you can write anything, it is input type text, it is in, I think it is input type email, and input type password. First we will see the code. Input type text, that means a text box will appear. Input type email, that means टाइप ईमेल इज मीनिंग इज दैट कि अब वो टेक्स्ट बॉक्स ईमेल के फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने वहां पे लिख दिया सिर्फ XYZ और सबमिट कर दिया तो वो सबमिट नहीं करेगा, उसको वो एरर दे देगा। इनपुट टाइप पासवर्ड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पासवर्ड का क्या रोल होता है। अब देखिए यहाँ पे रेडियो बटन कैसे बनता है। फर्स्ट इनपुट टाइप रेडियो एंड देन वैल्यू दे दी मेल, तो वैल्यू मेल दे दी है, दैट मीन्स यहाँ पे मेल लिख दिया है। तो अब क्या करेगा वो, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है मेल, वो वहाँ पे मेल शो करेगा। ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया फीमेल इनपुट टाइप रेडियो के साथ में, तो क्या करेगा वहाँ पे टेक्स्ट जो अपीयर होगा वो फीमेल होगा।
और साथ में एक दे दिया हमने अदर्स भी, तो अदर्स भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेल फीमेल अदर्स। इसी तरीके से हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स बनाते हैं, और इसके साथ में जो टेक्स्ट हम बाहर लिखते हैं वही टेक्स्ट क्या होते हैं, बाहर अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्स्ट एरिया, यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स होंगे, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, ये हमको यहाँ डिफाइन करनी पड़ती है बाय यूजिंग दिस रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट। कितनी हाइट चाहिए आपको और कितनी विड्थ चाहिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनता है, देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है। देखिए ये जो एपीआर है लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट, ये तो आया सिलेक्ट टैग की वजह से। बट जब हम इस पर क्लिक करते हैं और ये कंटेंट मिल रहा है हमको BCA MCA, ये और सिलेक्ट ये लिखा हुआ है जो टेक्स्ट है, जो ये आता है ऑप्शन की वजह से। कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा हमने, ये सिलेक्ट, ओपनिंग सिलेक्ट एंड क्लोजिंग सिलेक्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं सोच सपोज कीजिए ये ऑप्शन यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ देखिए अब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, देखिए अब सिलेक्ट ये है, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि सिलेक्ट बॉक्स सिर्फ ये स्ट्रक्चर दे रहा है, बट इफ वी वांट टू ऐड सम आइटम देन वी नीड टू यूज ऑप्शन। तब ऑप्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो भी क्या होगा, वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ देखिए, देखिए ये आ गया।